Hello guys, my name is Smruti, your coach from Smruti's Knowledge is present here with the physics chapter. Let's see what's the chapter. The chapter is nothing but light, shadows and reflections part 2. We have completed part 1 and today we will do the part 2. Okay? Before learning a beautiful quote for you, your future is created by what you do today, not tomorrow. आपका फ्यूचर क्रिएट आप ही करते हो जब आप लोग एक काम को आज ही करते हो, कल नहीं. समझ में आ गया? तो लेट्स स्टडी टुडेज चैप्टर, टुडेज लर्निंग. So in the previous class, I mean the light, shadows and reflection part 1, we have learned about the light, right? Today we will learn about the shadows. Shadow is also very important. Okay? Shadow is also very important. You have to learn it and understand it. What is shadow? When an opaque or transparent object is placed in the path of light, a dark patch of the same shape is formed on the opposite side of the object on a screen, which is generally a wall or ground. This dark patch is called nothing but shadow. What is shadow? जब एक ओपाक या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आके पाथ लाइट के पाथ में ऐसे रह जाता है, एक डार्क पैच मीन्स एक उसका शैडो, एक डार्क पैच उसकी सेम शेप का, नॉट द सेम साइज, सेम शेप का यहाँ पर आकर गिरता है, उसका ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द शैडो. ओके, ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को? व्हाट इज शैडो? ओके. नाउ देयर इज ए इम्पोर्टेंट टॉक दैट वी नो दैट we use opaque or transparent object to form a shadow, but how the shadow was formed by the opaque object, how the shadow was formed by the transparent object. Opaque object don't allow light to pass through them, so the shadow forms dark. In transparent objects some light can pass, means the shadow will be also faint or partially. आया समझ में ये वाला? ओपाक ऑब्जेक्ट में डार्क आएगा शैडो, लेकिन शैडो जो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में फॉर्म होगा वो होगा फेंट या तो पार्शियली. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो? What are the conditions required for the formation of shadow? What are they? Okay, now आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशंस. यस, शैडो को फॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत है? फर्स्ट तो हम लोगों को ए सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट ज़रूरत है, एक स्क्रीन ज़रूरत है, और एक मीन्स स्क्रीन का मतलब जहाँ पर शैडो फॉर्म होगा. ओके, जहाँ पर शैडो फॉर्म होगा. क्या चाहिए हम लोगों को? एक सोर्स ऑफ लाइट और ए स्क्रीन एंड ओपाक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये 3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए. ओके, here you can see the diagram of a shadow formed. Here is the bulb, that is the light, that is the source of light. Okay, this this is the object, the apple, the object here,
This is the opaque object. Okay, now this is the screen. This is the screen on which the shadow will form. And here this shadow. And here this shadow. कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? Okay. Now let's go forward. Now the shadow formed of a tree at different parts of a day is the following. देखिए, early morning. ये मैंने मॉर्निंग का बात मैं बोलूँ. मॉर्निंग चल रहा है अभी. तो यहाँ पर हमारा सन है. यहाँ पर हमारा सन है. देखिए ये वाला अच्छे से सुनिए आप लोग, क्योंकि ना ये मैं भी याद नहीं रख पाती थी, लेकिन अभी याद रख दी हूँ. नाउ दिस इन द मॉर्निंग टाइम in which the sun is here. Now the sun rays means the light is coming, and here the object, and here this shadow formed, and it is the around the screen. जब सन ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, ओके, तब ऐसे शैडो गिरेगा. यहाँ पर है तो वेस्ट को शैडो आएगा. लेकिन ये नून टाइम में सबसे शॉर्टेस्ट शैडो आएगा. देन इवनिंग में यहाँ पर वेस्ट साइड में होगा, तो यहाँ पर इस साइड में होगा. इन द लेट आफ्टरनून. ओके, इन द लेट आफ्टरनून. समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शैडो. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक शैडो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, let's see the characteristics of the shadow. Shadows are always formed on the opposite side to the source of light. Shadows always form होते हैं एक लाइट के opposite sides को. Shadows are black or grey even if the object is colored. Shadows black और grey होते हैं even if the, यदि भी ऑब्जेक्ट कलर्ड है, मीन्स वो कलर्ड है, कलरफुल है या कोई भी कलर का है, शैडो तो ब्लैक और ग्रे ही आएगा. द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट देन द शैडो ग्रोज बिगर, while if an object moves away from the light source then the shadow becomes smaller. कुछ समझ में आ गया? लेट मी टू टीच यू. तो जो साइज है शैडो का वो डिपेंड्स करता है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है. यदि ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट को के पास आया तो शैडो बड़ा आएगा. लेकिन इफ द ऑब्जेक्ट moves away, means goes at a distance from the light source, then the shadow will become smaller. Now a shadow only shows the outline of the object. A shadow only shows the outline of the object and not the details. Okay, समझ में आ गया ये वाला? ओके, ये वाला मेन था. आप लोगों को स्क्रीनशॉट का टाइम हो गया है. अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे फर्स्ट. ओके, शैडोज. व्हेन एन ओपाक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट is placed in the path of light, a dark patch of the same shape is formed on the opposite side of the object on a screen, which is generally a wall or ground. This dark patch is what? Nothing but the shadow. Taken the screenshot of this page. Now, shadow formed by opaque objects are dark, but the shadow formed by transparent objects are faint or partial. Okay. Now, what are the conditions required for the formation of shadow? Nothing but, what are they?
They are a source of light, an opaque or translucent object, a screen. Okay, now let's go forward. Characteristics of a shadow. Shadows are always found on the opposite side to the source of light. Shadows are black or grey even if the object is colored. The size of shadow depends on the distance of the source of light from the object. If an object moves closer to the source of light, then the shadow grows bigger, while if an object moves away from the light source, then shadow becomes smaller. A shadow only shows the outline of the object and not the details, and etc. are the characteristics of shadow. ओके समझ में आ गया आप लोगों को? होप आप लोग सारे स्क्रीनशॉट ले गए होंगे. यदि समझ में आ गया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कैसे है वीडियो, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. And nothing but the least. Thank you and have a nice day.